topic is the restoration. रेस्टोरेशन मतलब किसी जुड़ाव को, जिस खो जाने उसको दोबारा पा लेना। So restoration, that the things that you lost, कि जो चीजें आपने खो दी है, that is belongs to you. मतलब जो चीजें आपसे नाता रखती थी। For example, you have a house, जैसे आपका एक घर है, but somebody has taken away, लेकिन किसी ने उसको ले लिया, and because of some problem, किसी परेशानी की वजह से। but लेकिन one day you restore again that house. लेकिन एक बार दोबारा आपको वो घर वापस मिल गया। That is the restoration. इसका मतलब है आपको वो चीज जुड़ाव हो गया। So restoration means you may be lost your health. इसका मतलब कि जैसे आपने अपनी सेहत खो दी हो, You may be lost your financial. या अपना पैसा खो दिया हो, You may be lost your family members. या अपने परिवारों को You may be lost your property. अपनी प्रॉपर्टी खो दी You हो, may be lost your family relationship. या अपने परिवार के सदस्य या नाता खो दिया हो, Brothers, sisters. भाई और बहनों को खो दिया हो। You may in one time you may be have a good family. हो सकता है कि इस समय में आपका बहुत अच्छा परिवार हुआ होगा। Then Satan enter and you fight and your family has destroyed. लेकिन शैतान जैसा आपके परिवार में आया, उसने हर चीज तोड़ दी। But God said that I will restore back. लेकिन परमेश्वर कहता है मैं उनको फिर से जोड़ दूंगा। That is the restoration. उसी का मतलब है जुड़ाव। So today my topic is the restoration. इसका मतलब है आज हम जुड़ाव की बात करें। We are going to enter the 2020 and this is the years of restoration. तो हम 2022 में जाने वाले हैं और उसमें हम जुड़ाव करेंगे। So 2020 is the years of restoration that we lost in this corona pandemic sickness problem. We have lost so many things. तो 2021 में हमने बहुत सारी चीजों को खो दिया जिसको हम दोबारा पाने वाले हैं। Some may be lost job, किसी की नौकरी खोई, some may be lost money, कई लोगों का पैसा खोया, or some may be lost business, किसी का व्यापार or खोया some होगा, may be lost family members. या परिवार को हिस्सा खोया होगा। Yes, people who die we cannot able to restore. हाँ, जो लोग मर गए हम उनको दोबारा जिंदा नहीं कर सकते। But there would be a restoration, joy and peace. लेकिन फिर भी आपके जीवन में आनंद दोबारा आ सकता है। And some may be died that they cannot be able to rise again. But when Christ comes, they will rise again. लेकिन जो लोग मर गए वो जिंदा नहीं हो सकते, लेकिन जब यीशु मसीह आएंगे अगर वो परमेश्वर विश्वास करते हैं वो दोबारा जिंदा होंगे। But maybe because of that you may be going through broken heart. लेकिन हो सकता है इस परेशानी की वजह से आपके दिल टूटे हो। So this is the things that God has promised us tonight, that I will restore back 2020 all the things that you have और lost. परमेश्वर यही वादा आज कर रहे हैं कि जो चीजें तुमने 2021 में खोई हैं उनको दोबारा जोड़ दूंगा। Amen. So the years that we are going to have is the restoration. तो 2022 के अंदर हम जुड़ाव मतलब हर चीज दोबारा पाने वाले हैं। So today many people lost their family, business, children, husband, wife, so many things. तो बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन में परिवार, पैसा या व्यापार बहुत सारी चीजों को खोया है। Some may be lost husbands, some may be lost wives, some may be lost mother, fathers. कई लोगों के जीवन में माता पिता या पति पत्नी की मृत्यु हुई Some होगी। may be lost uncles, auntie, family members. बहुत सारे लोगों के परिवार वालों के अंदर मृत्यु हुई होगी। Even I was lost last week. One of my uncles died, पिछले हफ्ते पास्टर की भी किसी अंकल की डेथ हो गई। and I didn't know he was died from this Delhi. वो दिल्ली में उनकी मृत्यु हुई। He was a big officer and he was बहुत बड़े retired. ऑफिसर थे। And 1 year he was here treatment in Delhi. एक साल उनका यहीं पर इलाज चल रहा था। But I used to pray in the phone. पास्टर कई बार उनके प्रार्थना Then करते the थे। last week he was passed away. तो पिछले हफ्ते उनकी मृत्यु हो गई। Then he was bring to Manipur. उनको मणिपुर ले जाया गया। Then when it's a Monday he was buried. और सोमवार को उनको दफना दिया। So many things in our life we lost. बहुत सारी चीजें अपने जीवन में हमने खो दी। But God is the one that I will restore you back. लेकिन परमेश्वर फिर भी कह रहे हैं कि मैं तुम्हें दोबारा जोड़ूंगा। God said that I will bless you again. मैं तुम्हें दोबारा आशीष दूंगा। And all the problems that you have going through, and I will bring back again. कि जो भी परेशानियां तुम्हारे जीवन में थे उनके हल मैं तुम्हें लेकर आऊंगा। That is the topic of today. और आज का विषय यही है। So let us turn to book of Joel. हम खोलते हैं योएल की किताब में। Yes, the book of Joel is the prophet book. हम खोलते हैं भविष्यवक्ता की किताब में। The book of Joel chapter 2. The book of Joel chapter 2. Yes, the book of Joel chapter 2 and here I will read from here verse 21. 162 पेज नंबर। The Bible says, "Fear not, O land, be glad and rejoice, for the Lord has done marvelous things." तो हम देखते हैं 2 का 21 में क्या लिखा हुआ है। 21। Yes, 21.
Joel chapter 1 verse 21. हे देश तू मत डर, तू मग्न हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। Amen. Amen. So the Bible says here, fear not. कि डरो मत, Be glad and rejoice. कि मग्न हो जाओ, आनंद करो, For the Lord has done marvelous क्योंकि things. यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। So today God said, fear not. तो परमेश्वर कह रहा है कि डरो मत। So though you might be fear with next year what will be happening. हो सकता है आप ये डर रहे हो कि अगले साल क्या होगा, You might be fear the next year what is going to be कि happening. क्या आपके जीवन में होगा। Today you might be sitting here 2020, same thing, the corona or Omicron, so many sickness are happening, you might be fear. आप सोच रहे होंगे कि इस साल कितनी सारी बीमारियां हैं, क्या वो बीमारियां आगे भी चलेंगी। Or you may be fear that your family may lose. आपको लगता हो कि नहीं मेरे परिवार का Or you might be fear that your business may be lost. या आपको डर लग रहा है कि मेरा व्यापार Your खत्म हो house जाए, may lost. आपका परिवार खत्म ना Or हो जाए, anything can be afraid कोई भी of. चीज खोना चाहे, But God has promised लेकिन us, परमेश्वर के वचन दे रहे हैं fear not. कि डरो मत। But He said, और वो क्या कह रहे be हैं rejoiced, कि आनंद करो, be glad. खुश रहो, And the Lord has done marvelous things. परमेश्वर ने बड़े कार्य करे। So this is the promise of God. ये परमेश्वर का वादा है। So God said, fear not. परमेश्वर कह रहा है कि डरो मत। So today when we are worshiping something, the fear spirit, I can feel it. तो जैसे भी हम आराधना कर रहे थे, परमेश्वर को एक डर की आत्मा भी दिखाई दी। So the Bible says, fear not, I am with you. तो परमेश्वर का वचन कहते हैं कि डरो मत, मैं So तुम्हारे साथ हूँ। instead of fear, तो डरने की बजाय what the Bible says, बाइबल क्या be बताती है glad, कि आनंद करो, be rejoiced. मग्न हो जाओ। So when you are fear, क्योंकि जब आप डरते हो, see, every fear comes from Satan. हर डर शैतान की ओर Today से। many people are fear and because of fear many people are dying. आज बहुत सारे लोग डर से ही मर रहे हैं। Sometimes people are not really sick, कई बार लोग सच में बीमार नहीं होते, but when they see in the news, लेकिन जब वो न्यूज़ देखते हैं, when we see everywhere there is no good news, हम जब देखते हैं हर जगह में जब बुरा समाचार but होता the है, good news we receive only in the Bible. लेकिन अच्छी खबर हमें सिर्फ बाइबल से ही मिलती है। So the Bible says, fear not. बाइबल बताती है मत डरो, But instead of fear, लेकिन डर की बजाय He said, be glad, आनंद करो, be rejoiced. मग्न हो जाओ। So when you glad, when you fear, what happened? तो जब आप डरते हो तो क्या होता है? When you fear, then you become, your heart becomes small. तो जब आप डरते हो तो आपका दिल बहुत छोटा हो जाता है, And when you fear, you become tremble, you know. और आपका दिल कांपने भी लगता And है, when you fear, your heart beating will be becoming faster. और हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। Then there is why many people today, because of fear, many people are heart attack and die. इसलिए बहुत सारे लोग डर की वजह से हार्ट अटैक से मर जाते हैं। Because it is not all about sickness. सिर्फ बीमारी से नहीं, Today many people are fear because of third wave or Omicrons are happening, another new disease. कई लोग डर रहे हैं कि अब कोई नई बीमारी आ जाएगी या थर्ड वेव आ जाएगी। So today many people are feared by seeing the news. आज बहुत सारे लोग सिर्फ खबर देख के डर रहे हैं, But this is the way in the reality. पर सच्चाई में In this winter season, कि इस सर्दी में sometimes we are living in this world. हम जैसे दुनिया में रह रहे We हैं, face sickness. हम बीमारियों का सामना करते हैं, Sometimes fever, कई बार sometimes बुखार, running nose. जुकाम। Today, before all this corona happened, before all this sickness, where is the name? तो इतनी सारी बीमारियां होने से पहले ये बीमारी के नाम कहाँ थे? Before we used to have a running nose and we have used to have happen so many things happening in our पहले life. सर्दियों के अंदर कितने बुखार होते थे, लोगों को जुकाम होता था, But today we forgot all these things. पर आज हम उन सब की बात नहीं And करते। today we are afraid of the corona. हम बात करते हैं कोरोना की, And anything happen, everyone is, little bit fever, little bit headache, and then we started that panic that there is a corona, there is a अब किसी Omicron. को हल्का सिर दर्द भी हो तो लगता है अरे कोरोना तो नहीं हो गया। So this is the fear that Satan bring into the तो heart. शैतान इसे लोगों के डर मन में ये डर लेकर Because आता है, the fear is the strong force of Satan. क्योंकि डर एक बहुत बड़ा हथियार है शैतान का। Because of many people fear, because of that they die. और बहुत सारे लोग डर के कारण ही मर रहे हैं। What kind of fear? किस तरह का डर? The fears of money, no पैसे money. का कि पैसा नहीं होगा, The fears of no job. या नौकरी नहीं होगी, The fears of sickness. या बीमारी हो The जाएगी, fears of disease. या कोई रोग हो The जाएगा, fears of fighting. या लड़ाइयाँ हो The जाएगी, fears of witchcraft, black या magic. काला जादू या कोई तंत्र मंत्र कर And देगा। so many things that we go through fear. बहुत सारी चीजें डर की वजह से हमारे It जीवन is में। not all about sickness. ऐसा नहीं कि सिर्फ बीमारियां, And we also fear about marriage. कई बार शादी की परेशानी We होती है, also fear about so many things in our life. बहुत सारी चीजों का डर होता The है, fear about education पढ़ाई का डर होता है, and so many things. बहुत सारी चीजें। That's what the Bible says. इसलिए बाइबल बताती है Fear not. कि डरो मत, And then what is there? All land, लेकिन क्या करो? be glad. हमेशा So आनंदित रहो। instead of fear, तो डरने की बजाय God said be glad. परमेश्वर कहता है आनंदित Be रहो, rejoiced. आनंद करो। But most of the time, लेकिन ज्यादातर हम क्या करते instead हैं? of glad,
खुश होने की instead बजाय, of rejoicing आनंद करने की in बजाय 24 hours, 24 घंटे में you से may be 1 hour happy, 1 घंटा तो खुश रहते हैं, but most of the time, पर ज्यादातर समय 23 hours, 23 घंटे we always fear, हम डरते हैं, we always tension, हम टेंशन में रहते हैं, we always negative. या नेगेटिव सोचते हैं। That is why I see so many things are happening and our blood pressure becomes so high. और इसलिए हमारा ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है। So there is a sickness can happen anytime, तो बीमारियां तो कभी भी हो सकती any हैं, moment, किसी भी समय, because of fears. डर की वजह से। That is why God said, don't be afraid. इसलिए परमेश्वर कहता है डरो मत, Fear not. डरो मत, Instead of fear, और डरने की बजाय be glad आनंदित रहो, and be rejoiced, आनंद करो, because क्योंकि the Lord has done marvelous कि things. परमेश्वर ने आश्चर्य कार्य करे हैं। So instead of you sharing the bad things, तो बुरी चीजें लोगों से बांटने की बजाय share the great thing what has God अच्छी done. चीजों के बारे में बात करें। Instead of you are sharing the no money, आप ये लोगों से बता रहे हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, you share the how God has provided for आप you. ये बोलिए कि परमेश्वर ने आज तक कैसे संभाल See, के when रखा you है। talk about bad things, जब बात करते हैं नकारात्मक चीजों की, inside there is a fear. तो अंदर ऑर्डर, But when you talk about good लेकिन things, जब अच्छी चीजों की बात करते हैं, inside there is a तो joy. अंदर से आनंद निकलता There है is a glad. और खुशी होती That है। is what God said. इसलिए परमेश्वर Don't कहता be है afraid, कि डरो मत, but be glad. पर आनंदित रहो, Be rejoiced. आनंद करो। The fear place, जो डर की जगह है, replay उसको जगह पर what we need to क्या भरना है उसके Joy. अंदर? आनंद भरना है, Peace. मग्न भरना है, and talk about और शांति भरनी है। talk about positive अच्छी things. चीजों के बारे में, भलाई के बारे में बात करें। Amen. आमीन। And then also what he said, और क्या बात होती verse है? 22. 22वें वचन में Do not be afraid, the beasts of the field, कि हे मैदान के पशुओं पर डरो, and for the open orchards and the spring up and the beers of the fruit. So God said, do not be afraid. तो परमेश्वर कह रहा है डरो मत। See, in the first point he said, fear not. पहली चीज उन्होंने बोला मत डरो, The second, दूसरी चीज do not be afraid. कि आप कि मत डरो, See, in Hindi is सेम चीज। same, but English is completely different. In English there is so many language. इंग्लिश भाषा के अंदर अलग अलग तरीके से बताया गया है। In English, fear is different, डर अलग है and do not be afraid is और different. भय अलग है। But in Hindi, Dhanama, one sentence. Same thing in my language is the one. But the Bible says, do not be afraid. पर बाइबल बताती है कि डरो मत, And the Bible also says, do not be fear. और भय भी मत खाओ, But instead of that, लेकिन उसकी जगह and be glad, लेकिन आनंदित be रहो rejoiced. और मग्न हो जाओ। So many times we are afraid. बहुत बार हम डरते हैं। What kind of afraid? किस तरह से डरते हैं? Afraid of the bad news, बुरी खबर से afraid डरते of the हैं, disease, बीमारियों से, and we are fear और भय खाते that हैं we are going to die. कि हम मर ना जाए। See, the fears and the afraid are completely different. हम देखते हैं डर और भय दो अलग चीजें In हैं। English, see, fear is talk about that something that you are going to be lost or you are lost. डर मतलब कोई चीज जो आपने खो दी है You या are fear to die. आप मरने से डरते हैं, That is the fear. वो भी डर है। But afraid, what is afraid? लेकिन भय क्या है? Afraid is that you are afraid of sickness, मतलब आपको बीमारियों का भय है, afraid of disease, या रोगों का भय, afraid of attack, या अटैक का भय, afraid of witchcraft and black या magic, काले जादू या or afraid that somebody will kill you. या आपको भय है कि कोई आपको मार देगा, That is, or you are afraid that you will, you are going to not going to be survived. या आपको लगता है कि आप जिंदा नहीं रहेंगे। That is the afraid. इसका मतलब है But भय, the fear लेकिन डर that you might be, fear for something that you mind that something that you are afraid to die. डर मतलब कि आपको मृत्यु का डर। And but the Bible says, don't be afraid. लेकिन बाइबल बताती है Don't डरो be मत fear. और ना ही भय But खाओ, instead of that, लेकिन उसकी जगह be glad, खुश रहो, be rejoiced. आनंदित हो जाओ। In Joy chapter, book of Joy chapter 2 verse 21 and 22. योएल की किताब 21वां 2 का अध्याय का 21 और 22 And then verse 23 says, और 23 be glad that you children of Zion कि हे सिय्योन के लोगों को and rejoice मग्न हो in the जाओ Lord. और आनंद The करो। God has formed the rain and faithfully, and He will cause the rain of the come down, the formal rains and the latter rains past months. Amen. So the Bible says, rejoice. बाइबल बताती है आनंद करो The formal rain has gone. कि पुरानी वर्षा तो खत्म हो गई। What is you might be going through the formal rain? पुरानी वर्षा मतलब आपके जीवन की पुरानी परेशानी। You might be formal rain with a lot of worry, tension, fear. हो सकता है बहुत सारी चिंताएं आपके जीवन में पुरानी Your tension for your life, your tension for your family, your tension for your children, your tension for so many things. अपने जीवन में अपने परिवार के लिए, व्यापार के लिए, बच्चों के लिए अलग-अलग चिंताएं होती हैं। Young people fear for what?
जो जवान लोग होते हैं किस चीज के लिए डरते हैं? Young people fears about their future, अपने भविष्य को लेकर डरते हैं, about their marriage, उनकी शादी about के लिए their डरते हैं, job, उनकी नौकरी about के लिए their डरते हैं, career. अपने करियर के लिए डरते They हैं, are afraid. वो डरते They हैं, are fear. उनको भय Then होता है। come our parents. और हमारे माता पिता, What is their fear? उनका डर क्या है? What is they afraid? वो किस चीज का भय खाते They हैं? are afraid for their children. बच्चों के They लिए, are afraid for their grandparents or grandchildren. अपने पोता पोती के लिए, They are afraid that their family members. उनको लगता है उनका परिवार All में, they are afraid that how will be their family. उनको लगता है आगे जाके मेरा परिवार कैसा So होगा। every person has different fear, तो हर इंसान के अलग अलग डर होते हैं, different afraid, अलग अलग तरह से भय खाते and हैं, different challenges, अलग अलग चुनौतियां and होती हैं, different temptation. अलग अलग परीक्षाएं होती हैं। All everyone has different kinds of fear. हर किसी का अलग Everyone अलग is डर not होता है। same. हर किसी का डर एक जैसा नहीं, But God said, लेकिन परमेश्वर कहते do हैं not be afraid, कि डरो मत, do not be fear. भय मत खाओ। But 2022 is coming, लेकिन 2022 जैसे आया है, and don't be afraid, don't be fear. डरो मत। You may be lost everything, हो सकता है सब कुछ खो गया हो, but I will restore you. लेकिन मैं दोबारा दे दूंगा। So be glad, तो आनंदित be रहो, resolved. आनंद करो। All the formal rain, पुरानी सारी वर्षाएं, you may be formal rain by crying, हो सकता है पुराने समय में आप broken रोते हो, heart, आपके दिल टूटे sad हो, sorrow, परेशान रहते हो, all your dreams, आपके सारे सपने, all your plans आपकी सारी की सारी might be destroyed हो सकता है नष्ट हो गए हो। in 2020 and 21 2020 और 21 because of the pandemic. पैंडेमिक की वजह So से you may be so many dreams, so many plans. बहुत सारे सपने आपके होंगे। All these things you might be thinking that you will not achieve your plans and your dream. आपको लगता है कि ये सब चीजें मैं नहीं पा पाऊंगा, But the Bible says, लेकिन बाइबल बताती do not be है afraid. कि डरो मत, Don't be afraid. भय मत खाओ। And the formal rain, the problem, difficulty, struggle has gone. आपकी पुरानी परेशानियां खत्म हो गई, And now लेकिन अब the latter rain is coming. अब नई वर्षा आ गई है, The new blessing is coming. नए आशीष आ The गए, new joy is coming. नया आनंद आ A गया, new life is coming. नया जीवन आ गया। Amen. God is good. और So that is the promise of ये God. परमेश्वर का वादा है, This is not my word, ये हमारे वचन but this नहीं, is the word of God. लेकिन परमेश्वर का वचन। So the Bible says, be resolved. तो बाइबल बताती है आनंद The करो, new things has coming. ये नई चीजें आ The रही new blessing are हैं, coming. नए आशीष आ रहे हैं, And be resolved for और that. आनंद करो, Hope for the new thing. उसके लिए आशा रखो, Dream for the new plan. नए सपने रखो, Resolve for the great thing. आनंदित रहो। Don't think that yesterday the things that happening. ये ना सोचो जो चीज कल हो गई, Yesterday you might be going through cry, broken heart. हो सकता है कल आपके दिल टूटे हो, Yesterday you didn't have job. हो सकता है कल नौकरी ना हो, Yesterday you fight. हो सकता है आपकी कल लड़ाई Yesterday हो, you might be pain that you have happening. हो सकता है आपके जीवन में परेशानियां हो, So today, लेकिन आज when you are live, जब आप जिंदा हैं, don't think about yesterday one. तो कल के बारे में ना सोचें। And today many a time people yesterday what is happening. तो हमेशा लोग सोचते रहते हैं कल मेरे जीवन में क्या हो, And today also we are carrying the yesterday thing. और कई बार आज भी हम कल की परेशानी को घसीटते रहते हैं, Then we could not able to happy and we could not able to और resolve. इसलिए हम आनंदित नहीं रह पाते, That is doing day to day life. और इसलिए हर रोज के जीवन में What God has given to you. परमेश्वर हमें क्या दे रहा है। The cry has gone. जो रोना है वो चला गया, Fighting has gone. लड़ाइयाँ चली गई, Money problem has पैसे की gone. परेशानी, Job problem has gone. नौकरी की परेशानी, Sickness has gone. बीमारियाँ चली गई। Don't think now in that situation. अब उन चीजों को दोबारा ना सोचें, But now think for the great things. लेकिन सोचे बड़ी चीजों के बारे Think में, for the good things. सोचे अच्छी चीजों के Think बारे for में, the joy. सोचे आनंद के बारे में। Amen. So the Bible says your dreams and your plans are not lost. तो बाइबल बताती है कि आपके सपने टूटे नहीं हैं, And God is still working. परमेश्वर दोबारा कार्य कर रहा है, God is not ending, परमेश्वर अंत नहीं कर रहा but है, God is working. पर परमेश्वर शुरुआत कर रहा है। Amen. आमीन। So this 2022, तो 2022 में God says do not be afraid. तो बाइबल बताती है कि डरो Don't मत, be fear. डरो मत, The former rain has कि gone, पुरानी वर्षा but खत्म हो now गई, the new rain has लेकिन come. अब नई वर्षा आ A गई, new planting has come in. और नई New fruit has come in. नई उपज होगी, So be and your dreams are not तो lost. आपके सपने टूटे नहीं हैं। Amen. आमीन। And then when you go to the 25, अगर आप 25 से बच्चे में जाते what the Bible says? बाइबल क्या बताती है? Joel chapter 2 verse 25. So I will restore to you the years that the swimming locust has eaten, and the crawling locust, and the consuming locust, and the swinging locust, my great army which I have sent among you. Amen. आमीन। So the Bible says, I will restore you. तो बाइबल बताती है मैं तुम्हें फिर नया कर The दूंगा। Bible talk about the crawling locust. You know the locusts that walking, मतलब टिड्डियों की बात करी गई है, and the locusts that flying, जो उड़ती भी है, and locusts that swallow.
जो निगली भी जाती है। See, the Bible talk about the three kinds of insect. बाइबल 3 तरह के कीड़ों की बात कर रही है। Some insect eating in the root कुछ कीड़े जो जड़ को खाते हैं and the tree die. और पेड़ बढ़ जाता है। Some insect flying कुछ कीड़े उड़ते हैं and you're planting और आप उनको and they eat the fruit और वो पेड़ पौधों को खा जाते हैं and the fruit you cannot receive. और आप उसके फल नहीं खा पाते। And some insect और कुछ कीड़े they are what? They are cutting or they are eating the leaf. वो पत्तियों को खा जाते हैं। So that is what the Bible talk about. यही बाइबल बताती है। Bible talk about the locusts. बाइबल बताती है टिड्डियों के बारे में। Some locusts eating in the root, कुछ टिड्डियां जड़ों को some खाती हैं, locusts eating in the fruit, कुछ फलों को खाती हैं or some locusts flying around and they bring the disease. और जो कुछ उड़ती हैं और बीमारियों को लेकर आती हैं। So the Bible says, तो बाइबल all बताती है this kind of locusts कि ये सारी टिड्डियां has destroyed your life, उन्होंने आपके जीवन को has नष्ट किया है, destroyed your family, आपके परिवार को नष्ट has किया है, destroyed your joy, आपकी नौकरी को has नष्ट किया है, destroyed your peace, आपकी शांति को नष्ट and किया है has so many things और बहुत सारी चीजें that Satan has destroyed. जो शैतान ने नष्ट करी है। So here the Bible, God talk about, तो बाइबल यहाँ क्या बता but रही है? He said, और उन्होंने कहा I will restore to you years. कि मैं तुम्हें दोबारा तुम्हारी हानि को भर दूंगा। Amen. So God said 2020, 22, I will restore your years. तो 2022 से परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारी हानि को भर And दूंगा। all the locusts and all these things that eaten by you. जो भी कीड़े तुम्हारे जीवन को खा चुके So हैं, our locusts might not be really insect. हो सकता है हमारे जीवन की टिड्डियां सच में कीड़े ना हो, Our locusts might not be really a worm. हो सकता है सच में कोई कीड़े ना हो, Your locusts might be different. हो सकता है आपके कीड़े जीवन के Your अलग हो, locusts might be fear. हो सकता है वो डर हो, Your locusts may be worried हो सकता है परेशानियां हो, because of you lost everything. क्योंकि आपने सब कुछ खो दिया, Because you lost your family members, आपने परिवार के your सदस्यों को खो loved दिया, ones, your friends, अपने प्रियजनों को, or you lost your business, अपने व्यापार or को, you lost your good health, अच्छी सेहत को, or you lost your property. अपनी प्रॉपर्टी को। So you might be, all these things are locusts that Satan brought. हो सकता है शैतान ने आपके जीवन में जो कुछ भी किया So हो, all these things that Satan is the one who eaten up. तो शैतान ही है जो खा रहा है। These are the locusts, ये सारे कीड़े हैं the who are eating us. जो हमें खा रहे हैं। But the Bible says, लेकिन बाइबल बताती do है not be afraid. कि डरो मत। 2020, 22, 2022 में I will restore you. मैं तुम्हें दोबारा नया करूंगा। Amen. I will restore you years. मैं तुम्हारे दोबारा नया करूंगा। So many years you have lost. तो बहुत सारे साल तुमने खो You दिए, lost your plan. अपने प्लान्स खो You दिए, lost your life. अपना जीवन You खो दिया, lost your dream. अपने सपनों को You खो दिया, lost your vision. अपने सपनों को खो दिया है। God said, लेकिन परमेश्वर you कहता are है not lost. कि तुमने खोया I will नहीं, restore you. मैं दोबारा नया करूंगा, I will restore you. मैं दोबारा जोड़ दूंगा। But what do we need to do? लेकिन हमें करना क्या We है? need to faith in God. हमें परमेश्वर विश्वास Trust in God. भरोसा रखना है, Because God promised never fail. क्योंकि परमेश्वर के वादे कभी नहीं टूटते। This is the promise of ये God. परमेश्वर का वादा है। I will restore you years. परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे सालों की हानि पूरी So करूंगा। this 2021, तो 2000 God is restore your years. तो 2022 में परमेश्वर सब कुछ नया This करेगा। years that 2022 that we are going to receive तो 2022 जो हमें is मिलने वाला the है, years of restoration. ये वो साल है जिसमें हम नए Is the होते हैं। years of joy. ये जुड़ने का Is साल the है, years of good health. अच्छी सेहत का Is साल the है, years of testimony. ये गवाहियों का साल है। Everything that you are lost, जो चीजें हमने खोई हैं, you are going to restore. आप जरूर पाएंगे। Amen. God is good. All the time, Because this is the promise of क्योंकि God. ये परमेश्वर का वचन है। And then also what he said. The Bible said, I will restore the years. And then also what he said in verse 26. You shall eat the plenty and sanctify and praise the name of the Lord your God, who deal wondrously with you, and my people shall never be put to shame. Amen. तुम पेट भरकर खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं। Amen. So here the Bible says, I will restore your years and you will eat the plenty of food that you have planted and you will be satisfied. तो परमेश्वर Amen. कहता है जो भी तुमने बोया है वो तुम उसकी उपज जरूर खाओगे। So in the so many years you might be planting but you never eat your हो crop. सकता है बहुत सालों से आप उपजा तो रहे हो लेकिन आप कुछ पा ना रहे हो। And you might be lost. आपने बहुत कुछ खोया हो, And you might be going through so many struggles. बहुत सारी परेशानियों का सामना किया हो। And you might be planting so many things you plant but you never get the fruit. हो सकता है बहुत चीज बो तो रहे हो लेकिन पा नहीं रहे हो। But what the Bible says, लेकिन बाइबल क्या बता रही है? I will restore your years कि मैं तुम्हारे हानि को and you shall be eat the plenty of fruit. और तुम पेट भरकर खाओगे
And then what also he said, I will deal wondrous things. और मैं आश्चर्य के कार्य करूंगा And I will never put you to shame. और कभी भी तुम्हें शर्मिंदा नहीं करूंगा। Hallelujah. आमीन। God said he will never put you to shame. परमेश्वर कहता है कभी भी तुम्हें मैं शर्मिंदा नहीं You करूंगा। may be ashamed in front of people. हो सकता है लोगों के सामने आप शर्मिंदगी Many people महसूस might करते be हो। put you to shame बहुत सारे लोग आपको शर्म महसूस कराते because हैं of your poverty, आपकी गरीबी की वजह because of से, your sickness. बीमारी की वजह से। So many ways people try to put us into shame. बहुत बार लोग हमें गिराने की कोशिश करते हैं। But the word of God said, लेकिन परमेश्वर क्या कहता I है will restore your years कि मैं तुम्हारे सालों की and you will be करूंगा plenty of food और बहुत कुछ to eat खाने को and मिलेगा you will be satisfied. और तुम तृप्त हो जाओगे And then and I will never put you to shame. और मैं कभी भी तुम्हें गिराऊंगा नहीं। Amen. So you may be thinking that you lost your dreams and everything. हो सकता है आपको लगता है आपने अपने सपनों को खो दिया है And you might be thinking that you have no hope. और आपके जीवन में कोई उम्मीद बाकी नहीं। But God said, लेकिन परमेश्वर कहते you हैं will be eating the fruit that you have planted. कि तुम जो बोया है उसके फल जरूर So खाओ। whatever you are planting, तो जो भी आपने बोया है one thing is that एक चीज है what plant you are planting. कि क्या आपने बोया, That is the important thing. ये चीज जरूरी है। You might be planting evil things. हो सकता है आपने बुरी चीजें बोई हो Then surely you will root the तो आप बुरी evil. चीजों के ही फल खाएंगे। But if you planting the fruit, good things, लेकिन अगर आपने अच्छी चीजों को बोया है surely you will get the good fruit. तो आप अच्छे फल ही खाएंगे। So what the God said, I will restore you and you will be praise the name of God and I will deal with you and I will never put you ashamed. तो परमेश्वर कह रहे हैं मैं तुम्हें कभी शर्मिंदा He नहीं said, करूंगा। my people shall never put you ashamed. परमेश्वर कहते हैं मेरे लोग कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। So who call upon the name of कि God, तो जो भी परमेश्वर के नाम Who को पुकारता pray है, to God, जो प्रार्थना करते who हैं, live with God, जो परमेश्वर के साथ who जीते trust हैं, in God, जो विश्वास who करते हैं, depend in God, जो भरोसा who रखते do हैं, the will of जो God, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार God चलते will हैं, never put you to परमेश्वर उन्हें ashamed. कभी नहीं गिराते, God will never put you to कभी ashamed. नहीं गिराते। But many times we put to ashamed लेकिन कई बार हम शर्मिंदगी क्यों महसूस करते हैं? because क्योंकि we obey the voice of Satan. हम शैतान की आवाज सुनते हैं। Satan is always one every day trying to put us into ashamed. शैतान हमेशा हमें शर्मिंदा महसूस कराना And चाहता है। Satan will never put you to, never put you to proud. जो शैतान है कभी भी Satan will never put you to be happy. शैतान कभी भी खुश नहीं होने देगा। Satan will never put you to be success. कभी आपको सफल नहीं होने देगा। Satan will never put you to be good health. कभी आपको अच्छी सेहत नहीं लाने देगा। Satan will never put you to be a prosperity. वो नहीं चाहता कि आप उन्नति पाएं। Satan will never put you to your dreams, your plan to be successful. शैतान कभी नहीं चाहता कि आपके सपने पूरे हों। Satan plan is that make sure that your plan, your dreams should be destroyed. शैतान यही चाहता है कि जितने आपके सपने हैं वो टूट जाएं। Satan plan that make sure the Satan plan is that your health, your family, everything should be torn तो apart. शैतान यही चाहता है कि आपकी सेहत, आपका परिवार सब टूट जाए। That is how the Satan works. शैतान यही चाहता है। But what the Bible says, लेकिन बाइबल क्या बताती है? my people कि मेरे लोग who believe in me, जो मुझ में who विश्वास trust करते in हैं, me, जो मुझ में भरोसा रखते who हैं, do the will of जो God, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार I चलते will हैं, never put you to मैं ashamed. तुम्हें कभी भी शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। So God will never put you to ashamed. तो परमेश्वर कभी आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा। But we will be plenty of food that we have invested and we will be getting and God will bless us. तो जो भी हमने बोया परमेश्वर उसकी जरूर अच्छी उपज देंगे। Amen. आमीन। So that is the years that we are going to receive. तो ऐसे ही साल हमारे जीवन में So आने the वाले हैं। coming years will be a years of God will never put us into a sin. तो नया साल ऐसा होगा जिसमें परमेश्वर हमें शर्मिंदा नहीं होने Those देगा, who trust in the Lord. जो भरोसा रखेंगे। And whatever you are planting, you are going to eat the fruit that you तो have जो भी planted. आपने बोया है जरूर आप उसकी उपज खाएंगे। Amen. And then also what the Bible says, verse 27. In the Joel chapter 2, verse 27. Then you shall know that I am the Lord in the midst of Israel. I am the Lord of your God, and there is no other God. My people shall never put to ashamed. तो 27वें वचन में लिखा है तब तुम जानोगे कि मैं इज़राइल के बीच में हूँ और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ और दूसरा कोई नहीं है। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी नहीं टूटेगी। Amen. See, here the Bible talk about my people will never put to ashamed. तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे लोग कभी नहीं गिराए जाएंगे। And then here he is telling about 2 times. तो यहाँ पे परमेश्वर 2 बार कह रहा है। In verse 26 also say, my people will never put to ashamed. तो 26वें वचन में भी लिखा है कि मेरे लोग शर्मिंदा And नहीं होंगे। 27 also say, my people will never put to और ashamed. 27 में भी लिखा है कि मेरे लोगों की आशा नहीं टूटेगी। And there is no other God. कोई और परमेश्वर नहीं है। God said, I am the God. परमेश्वर कहता है मैं ही हूँ। And the children of God, और परमेश्वर के लोग, the people of God, परमेश्वर के बच्चे, God will never allow you to put into ashamed. परमेश्वर कभी आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा। You might be put into ashamed with society, with culture, with family member, with religion,
with so many things हो सकता है परिवार में, समाज में कई बार आपको शर्मिंदगी महसूस हुई in so many years. बहुत सालों में You may be crying alone आप रो रहे हो अकेले and nobody knows. कोई जानता ना हो And many people were insulting you. बहुत सारे लोग आपकी बेइज्जती करते Many हैं people were rejected you. बहुत सारे लोग को Many नकारते हैं people will not accepted you. कोई आपको अपनाता How हो much you do good things, कितना ही आप अच्छा कर रहे but they never recognize you. वो आपको कभी भी आपको देखते नहीं होंगे But God is promising us, लेकिन परमेश्वर कहता है I will never put you to a मैं sin, कभी तुम्हें गिराऊंगा नहीं and you will be blessed. और कभी शर्मिंदा नहीं And करूंगा I am the God of the Israel. और मैं वो परमेश्वर हूँ जो इजराइल का हूँ What is the Israel? इजराइल क्या है Israel is not talk about the Israel people. इजराइल मतलब यहाँ पे इजराइल के लोगों उस देश की बात नहीं Bible कर talk रहे about the Israel. बाइबल इजराइल की बात Israel करती है means the meaning of Israel इजराइल का अर्थ है is the chosen people, मतलब कि चुने हुए लोग called out people, परमेश्वर को इनको बुलाया हुआ है God's people. परमेश्वर के लोग That's why when you read in the book of Old Testament, तो जब पुराने नियम में पढ़ते हैं many times God talk about the Israelites. बाइबल बहुत बार इजरायलियों की बात करती है So it is not the talk about the foreign country, तो हम यहाँ पे दूसरे देश की बात नहीं कर रहे but God talk about how the Israelite, the name Israel come out. परमेश्वर कह रहे हैं इजराइल शब्द कहाँ से आया The name Israel is not coming from the nation of Israel. तो इजराइल का नाम देश से नहीं आया In the beginning, शुरुआत में Jacob, जो याकूब था through the Jacob name, याकूब के नाम के द्वारा Israel name has come. इजराइल नाम आया And when Jacob was wrestling with angel, जब याकूब परमेश्वर के दूत के साथ लड़ रहा था and a whole night, पूरी रात when you see the book of Genesis, अगर हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं the whole night he was wrestling तो with पूरी God. रात याकूब स्वर्गदूत से लड़ रहा था Then Jacob told to the angel, तो याकूब ने स्वर्गदूत से Jacob कहा told to God, परमेश्वर से कहा until and unless you bless me, I will never leave you. जब तक तुम मुझे आशीष नहीं दोगे मैं तुम्हें So जाने नहीं Jacob was holding and fighting the God दूंगा। उन्होंने परमेश्वर को पकड़ा the हुआ whole night. पूरी रात Then the God cannot come out. परमेश्वर बाहर नहीं आ पाए And what to do? उन्होंने कहा क्या करें God need to bless. परमेश्वर उसे So आशीष Jacob was wrestling with God, and you know Jacob was wrestling with God. तो याकूब परमेश्वर के साथ लड़ रहा था If you are not bless me, I will not leave you. अगर तुमने मुझे आशीष नहीं दिया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा Then in the last, और अंत में God said, परमेश्वर ने कहा today your name shall not be called Jacob. तो आज से तुम्हारा नाम याकूब नहीं Your रहेगा name shall be called as Israel. लेकिन तुम्हारा नाम इजराइल हो So जाएगा that is how the Israel name. और वहीं से इजराइल नाम आया So Israel means a blessed तो person. इजराइल मतलब कि Israel means a chosen people, जिनको चुना गया है called out people, बुलाए गए लोग God's people. परमेश्वर के लोग So who know God, जो परमेश्वर को who जानते हैं worshiping जो God. परमेश्वर की आराधना God करते हैं always talk about Israelites. परमेश्वर हमेशा इजराइल God की talk बात about करते हैं Israel. इजराइल की बात So we are the Israel people. हम इजराइली We लोग हैं, are the child of God. क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं। So here the Bible says, यहाँ बाइबल बताता my है people will never put what they are saying. कि मेरे लोग कभी I शर्मिंदा am नहीं the होंगे God of the Israel. मैं इजराइल का And I परमेश्वर am the God of the Alpha and Omega. मैं शुरुआत और अंत हूँ। So those who believe in Christ, तो जो यीशु विश्वास करते हैं 2020 that we are going to receive, तो जो 22, 2022 हमें मिलने वाला है the Lord is going to restore you. परमेश्वर हमें फिर से जोड़ God देगा is going to restore you. हमें क्या देगा Everything that you have lost. जो भी चीजें खोई हैं उन You सबको may be दोबारा lost देगा your joy. हो सकता है You अपना may आनंद be खोया lost your हो life. अपना You जीवन may be lost your business. अपना You व्यापार may be lost your family अपने members. परिवार के You लोग may be lost everything. हर एक चीज All your dreams and all your plans. आपके सारे सपने आपने खो दिए होंगे But God said, लेकिन परमेश्वर I will कहता restore है you. कि मैं दोबारा दे दूंगा And I will bless you. और उसे आशीष And दूंगा I will never put you to a sin. और कभी तुम्हें शर्मिंदा नहीं करूंगा Amen. आमीन And then also in the what the Bible said, बाइबल क्या बताती है I will restore your health. कि मैं तुम्हारी सेहत को भी दोबारा ठीक See, करूंगा this is the promise of ये God. परमेश्वर का वचन है Today our topic talk about the restoration. तो आज हम बात कर रहे हैं दोबारा खोई हुई चीजों को पाने की So God said, I will rest. I say in the beginning, God will restore your years. परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे सालों की हानि This पूरी is the करूंगा promise of God. जो परमेश्वर So का वादा now है। He said, I will restore your health. परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारी सेहत को ठीक करूंगा You might be having sickness. हो सकता है कि So तुम्हें many बीमारियां years. हो बहुत सालों से Might be diabetes. डायबिटीज Might be cancer. कैंसर हो So many disease. बहुत सारी बीमारियां Or you may be so many disease that you are going through in life. आपके जीवन में बहुत सारी बीमारियां हैं Treatment after treatment. बार-बार ट्रीटमेंट ले रहे हो Medicine after medicine. दवाइयां ले रहे हो But what the God promised to us, लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है I will restore your health. कि मैं तुम्हारी सेहत को I दोबारा will ठीक give you करूंगा back good health. दोबारा अच्छी सेहत Every sickness come from Satan. हर बीमारी शैतान की ओर से God never gives sickness. परमेश्वर बीमारी नहीं देता Even God doesn't know what is sickness. परमेश्वर को तो बीमारी के बारे में पता ही नहीं Because he don't know, because he didn't make sickness. क्योंकि परमेश्वर ने बीमारी
बीमारी नहीं So बनाई। every sickness तो हर एक बीमारी come from Satan. शैतान की ओर से। So what God said, तो परमेश्वर क्या कह रहे I हैं? will restore your sickness. मैं तुम्हारी I बीमारी, will destroy the sickness मैं बीमारी को नष्ट and I will करूंगा restore your health. और तुम्हारी सेहत को ठीक Let करूंगा। us turn to Jeremiah, हम खोले यिर्मयाह किताब, the book of Jeremiah chapter 30. यिर्मयाह 30 The book of Jeremiah chapter 30, verse 17. The book of Jeremiah chapter 30 verse 17. Thank God that still 10 o'clock you can come in. That means there is no curfew. Amen. See, in the actual, in the ground, nothing happened. Many people today, they say that there is a curfew, we will not able to come here. तो लोग कह रहे हैं how कि the fear Satan put to the तो people. कई लोग कह रहे हैं कि 10 बजे के बाद कर्फ्यू है, लोग जा नहीं सकते, लेकिन 10 बजे के बाद भी लोग आ रहे हैं, इसका मतलब ठीक है सब। See, that is the thing. When you face it, you will see the जब आप reality. देखते हैं तो आपको पता लगता है। But Satan always, before you face, they will bring fear. लेकिन शैतान हमेशा चीजों के आने से पहले हमें डरा That's देता why है। today the Bible we have already read, do not be afraid. तो बाइबल में हमने So the पढ़ा Bible है, says, I will restore your health. बाइबल बताती है कि तुम्हारी सेहत फिर से ठीक Let us होगी। come to Jeremiah chapter 30 verse 17. यिर्मयाह 30 का 17, Jeremiah chapter 30. यिर्मयाह 30 का 17, Okay, pretty read in Hindi. मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा, आमीन। यहोवा की ये वाणी है, क्योंकि तेरे नाम ठुकराई हुई पड़ा है, वह तो सिय्योन है, उसकी चिंता कौन करता है? Amen. So today we are also using only one speaker because our sounds will not go out. So here the Bible says, I will restore your health. परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें चंगा करूंगा। This is the God's promise. ये परमेश्वर की आशीष This है। is not God. The Bible says heaven and earth will pass away, परमेश्वर का वचन कहते हैं कि स्वर्ग और धरती तो टल जाएगी, but my words will never pass लेकिन away. मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। So you may be going through a lot of pains and sickness and your हो health. सकता है आपके जीवन में बहुत सारी बीमारियां या You दर्द may be having your organs problems. या आपके शरीर के हिस्सों में I परेशानी। have a problems with gastric. So many things. People have different kinds of disease. तो लोगों के जीवन में अलग-अलग तरह की बीमारियां होती हैं। I didn't have any disease, पास्टर कहती है मुझे कोई but I बीमारी have है, a gastric fighting so many years. लेकिन गैस की परेशानी बहुत सालों से। But always God healed me. लेकिन परमेश्वर मेरे So you may be having diabetes. हो सकता है आपके You जीवन में may be डायबिटीज हो, treatment so many years. बहुत सालों से चल You may be treatment something that sometimes suddenly happen in the night, suddenly happen in the day, suddenly happen when you go out, so many things. जब बाहर जाते हैं दिन में सुबह बहुत सारी परेशानियां आपके जीवन में होती हैं। Everyone who are sitting here, we have all kinds of sickness we are carrying. हम लोग जितने हैं बैठे अलग तरह की बीमारियां लेके बैठे हैं, Because God, Satan doesn't want to see your good health. क्योंकि शैतान आपकी अच्छी सेहत को देखना नहीं चाहता। Satan is that, when the good tree is come out, जब एक अच्छा पेड़ बढ़ता है he will bring the insect to destroy तो them. शैतान क्या करता है, कीड़ों को छोड़ देता है। So God created a beautiful, good health and blessed life. ऐसे ही परमेश्वर ने भी हमारे जीवन में अच्छी सेहत को डाला, Don't want to see a good health. लेकिन शैतान अच्छी सेहत नहीं देखना So चाहता, he brought some kind of sickness and disease. तो बीमारियां हमारे जीवन में लेकर आता है। But God never allowed us to kill and to destroy. लेकिन परमेश्वर हमें मरने नहीं देते। This world we are dying because this world is not our home. इस दुनिया में तो हमें मरना ही है, क्योंकि One दुनिया day हमारा we घर will नहीं है। go. एक दिन तो हम सबने मरना है, When our time has जब come. हमारा समय आ जाएगा। It is not that, the sickness will never kill you and sickness will never destroy you. ऐसा नहीं है कि कोई बीमारी लगेगी ही नहीं या हम मरेंगे ही नहीं, But God is promising to लेकिन us परमेश्वर ही वादा करते हैं that I will restore you the 2022. कि जो तुम्हारे साल तुमने खो दिए हैं, All हानि your उन्हें पूरा कर health. दूंगा, The health that you और are तुम्हारी going through. सेहत जो खराब हो उसे भी ठीक कर दूंगा। So he said, for I will restore your health तो तुम्हारी सेहत को ठीक करूंगा, to you, तुम्हें, and I will heal your wound, और तुम्हारे घाव को चंगा करूंगा, says the Lord. परमेश्वर कहता है। Because they go out of east saying, no one sick heart. Amen. So God said, I will heal your wounds. तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे रोग को चंगा करूंगा। So what is your wound? क्या है आपके घाव? Your wounds may be broken heart. हो सकता है आपके घाव के दिल टूटे हुए दिल हो। We wounds talk about, when you have something that जब there is घाव a की wound. बात करते हैं कि जैसे कोई चोट लग गई और So to heal their wounds, उस घाव को भरने के लिए, okay, I have something here, wound. So to heal this wound, I have take time. I put so many medicine, and there is a wound that sometimes I cannot open my mouth. So many times there is a wound. तो जैसे पास्टर के भी यहाँ पे घाव हो गया तो कई टाइम से वो दवाई लगा रहे हैं, उस पे टाइम लगता है घाव को ठीक So the होने में। Bible says, I will restore your wound. तो बाइबल बताती है I will heal your wound. कि मैं तुम्हारे घाव को चंगा करूंगा। So everyone may be having a wound तो हर किसी के जीवन में अलग in अलग your घाव life. होंगे। आपके जीवन So में many years, अलग अलग पूरे you साल try to heal their wound. आप उस घाव को
भरने की You कोशिश go कर to रहे so हैं। many doctors. आप डॉक्टर्स के पास गए You होंगे, apply so many medicine आपने अलग-अलग दवाइयां to मंगाया heal होगा their wounds, उस घाव को भरने के लिए, but you never heal. लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो रहे। But you never, fill up their wounds. उस घाव को भर नहीं रहे हैं, And that wound's always there. और वो घाव And हमेशा that है, wound's always pincing you, और वो घाव आपको हमेशा चुभ रहा है, day and night. सुबह से शाम। But God said, लेकिन परमेश्वर कहता है I will heal you, कि मैं तुम्हें चंगाई and I will heal your wounds. और तुम्हारे रोगों को चंगा करूंगा। Doctor cannot heal your wounds. डॉक्टर आपके घाव को चंगा नहीं कर Medicine सकते, cannot heal दवाई your भी wounds. नहीं कर सकती, But God said, लेकिन परमेश्वर कहता है I will heal you, कि मैं तुम्हें चंगा करूंगा and I will heal your wounds. और तुम्हारे घाव को भरूंगा। Amen. आमीन। This is the years that we are going to receive तो यही परमेश्वर की आशीष है जो 2022 में पाने वाले हैं, all our wounds. कि हमारे सारे घाव। Amen. आमीन। And then also what the Bible says, and the coming years will be a double honor instead of shame. So God is promising us परमेश्वर that क्या वादा कर रहा है the coming years, कि आने वाले साल instead of shame, कि शर्म होने की instead of dishonor, शर्मिंदा होने की बजाय, but you will be honored, लेकिन आपको इज्जत you will मिलेगी, be respected. आपकी इज्जत होगी। You may be lost your respect हो सकता है आपकी इज्जत आपने खो दी हो, because of some things that are happening in जो your आपके life. जीवन में कुछ हुआ उसकी You वजह may से be lost your honor. आपकी इज्जत आपने खो दी हो। Anything that happened and your honors, your respect, and your parents are not respecting, your children are not respecting, your society may not respecting, your church may not respecting, but God say, I will restore it back. हो सकता है आपके परिवार वाले, समाज वाले, चर्च वाले आपकी इज्जत ना करते हो, लेकिन परमेश्वर कहता है वो इज्जत में तुम्हें 2022 में लौटाऊंगा। So the coming year will be a years of respect, तो आने वाला जो साल होगा वो a इज्जत का years साल of होगा, honor. मतलब आपको इज्जत मिलेगी। Let us turn to Isaiah chapter 61. यशायाह 61 Isaiah chapter 61 verse 7. The Bible says, Isaiah chapter 61 verse 7. Instead of your shame, you shall be double honor. Instead of your confusion, they shall rejoice in their portion. Amen. See, the Bible says, 81 पेज नंबर Yes. पुराना नियम Isaiah chapter 61 verse 7. 61 का साल, तुम्हारी नाम धराई के बदले दूना भाग तुम मिलेगा, अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे, तुम अपने देश में दूने भाग के अधिकारी होगे और सदा आनंदित बने रहोगे। Amen. So the Bible says, I will restore you back double honor, respect, and everything. तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें 2 गुने इज्जत दूंगा। So you may be lost everything because of your situation that you're going through. You may be lost your respect, honor. हो सकता है आपके जीवन में परेशानी हो, आपने सब कुछ खो दिया हो, But Bible says, I will respect, I will double respect your पर portion. परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें 2 गुने इज्जत दूंगा, I will respect your double portion. मैं तुम्हें 2 गुने इज्जत दूंगा। Amen. And then what he say? All your confusion shall be resolved in their portion. और आपकी सारी कंफ्यूजन दोबारा से सुलझ जाएगी। And he said that I will, instead of ashamed, instead of put into dishonor, instead of put into disrespect, I will restore back double तो portion. शर्मिंदगी की जगह मैं तुम्हें इज्जत 2 गुनी दूंगा। Amen. So this coming year will be you with double portion respected. तो आने वाला साल परमेश्वर आपके जीवन में और इज्जत को भरेगा। This is the promise of ये God. परमेश्वर का वादा है, And this is how God has promised to us. ये परमेश्वर ने बोला है। Amen. And then also, therefore, in their land they shall be possessed double everlasting joy. तो परमेश्वर कहता है कि तुम्हारी जो जगह मैंने तुम्हें दी है उसके अंदर तुम्हें 2 गुने उपज मिलेगी। So you say that you might be in the land that we are living. तो जिस धरती पर आप रह रहे हो, Now we are living in the what country you are living? तो अभी आप किस देश में रह रहे हो? What country? Sometimes people doesn't know what country. कई बार लोगों को अपने देश का नाम भी नहीं पता होता। Sometimes people say which village you are coming from. कई बार लोग पूछते हैं आप किस गांव से आ रहे हैं? Oh, I forgot it. You know, so we should know that what country we are living, तो हमें पता होना चाहिए कि किस देश में हम रह रहे हैं, and we should know that what nation we are living. कि किस जगह पर हम रह रहे हैं। So the Bible says that therefore in their land they shall possess double everlasting joy. तो हमें उस जगह पर 2 गुने आनंद भी मिलना So चाहिए। God is promising us that we are living in the land of India, तो परमेश्वर हमें बता रहे हैं कि हम जैसे भारत देश में in रह the रहे हैं, capital of Delhi. तो हम भारत की राजधानी So में रह God रहे हैं। said, I will double honor, respect, I will restore it back. तो परमेश्वर कहता है मैं 2 गुनी इज्जत तुम्हें You लौटाऊंगा। may be coming here to Delhi हो सकता है आप दिल्ली में आए हो to fulfill and
to become a fulfillment all your dreams and all your कि plans. जो भी आपने सपने अपने जीवन में देखे उनको पूरा करने के लिए आप आए हो। We are coming from different places. हम अलग-अलग जगहों से आए Some हैं। are coming from Africa, कई लोग अफ्रीका से आए हैं, like what is the Sylvester, and all they are coming from thick jungle or city or whatever. And I coming from village, कई लोग गांव से, कई लोग शहरों से आए हैं, from the top of the mountain, पहाड़ों के ऊपर से भी, and I am landed here. और यहाँ पर आए। And you may be coming from the plain, you know, plain area. हम तो प्लेन से ही आए। You may be coming from ocean, you may be coming from dry land. See, कोई सूखी जगह से, कोई पानी से भी आए होंगे। we are coming to Delhi हम दिल्ली में आए to achieve our plan, हमारे जीवन में जो Our भी सपने dreams. देखे उनको पूरा करने के our लिए आए। vision. हमारे सपनों को। And that is how God. So God, you might, but when you reach it here, when you reach here, लेकिन जब आप यहाँ पहुँचे, when you started your job, जब आपने अपने or काम when को you शुरू started किया, looking for your dream to be fulfilled, जब आपने अपने सपनों को पूरा करने के you लिए might be सोचा, everything. There is a clause. आपने देखा हर चीज You बंद might है, be everything. There is no way. आपने देखा कोई रास्ता नहीं है, But the Bible says, लेकिन बाइबल बताती है I will be bless you, कि मैं and I will तुम्हें restore you, मैं तुम्हें नया करूँगा and I will give you the double position, और तुम्हें 2 गुना अधिकार दूंगा and you will be enjoying in the land, और तुम धरती के अंदर and there will be everlasting आनंद joy. करोगे। Amen. आमीन। So when God gives joy, जब परमेश्वर आनंद देता He है, will not give you joy just for minutes, ऐसा नहीं कि थोड़े समय का आनंद दिया, just for hours. ये नहीं कुछ घंटों का But आनंद, God said, I will give you the everlasting joy. लेकिन परमेश्वर कहता है कि जब मैं तुम्हें आनंद दूंगा तो वो अनंत का होगा। Satan can give you just a moment. शैतान तो कुछ समय का आनंद दे सकता है, See, Satan will say, just do it. शैतान कहेगा ये कर लो और आनंद आ Satan will जाएगा। say, just drink and wine. शैतान बोलेगा शराब पी लो और मजा आ जाएगा। So in that few moments, just one sip, तो एक घूंट you might be just happy. आपको अच्छा लगेगा, But the later, लेकिन उसके बाद you will get the double portion, आप सिर्फ 2 गुना पछताते ही रहोगे affecting your body. और आपके शरीर भी नुकसान पहुंचेगा। When your drink continue, जब आप शराब पीते रहोगे, your liver can fail, आपका लिवर खराब हो सकता है and anything can happen. और कुछ भी हो सकता है। So that is how the Satan works. ये शैतान But का when कार्य God ऐसे है। bless us, लेकिन जब परमेश्वर आशीष देता है, His blessing, His joy is everlasting. उनके आनंद और उनके आशीष हमेशा Not just for a moment, ऐसा नहीं कि कुछ समय, not just for hours, ऐसा नहीं कुछ साल के, not just for years. ऐसा नहीं कि एक ही साल The के। Bible says, I will give you joy, everlasting joy. बाइबल बताती है कि आपको हमेशा का आनंद दूंगा And I will give you the double honor. और 2 गुने इज्जत दूंगा। Amen. That is the God's promise. ये परमेश्वर का वादा है The promise of 2022. 2022 के लिए। And this is the promise of God. ये परमेश्वर का So वादा and है। the last thing I want to say, और अंत में हम क्या बोलेंगे and this is the years of restoration. कि ये साल है दोबारा से खोई हुई चीजों को पाने का। 2022 is the years of restoration. 2022 में आप खोई हुई चीजों को What पाएंगे। is the restoration? What is our the God say, I will restore you years. परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे सालों को दोबारा से नया करूंगा। In the years that in so many years you lost everything, जो इतने सालों से तुमने खो दिया है, and you may be lost in all your plans and dreams and joy and all your success. आपकी सफलता, आपके प्लान्स, आपकी उन्नति को जो आपने खो दिया But है, God said, I will restore you. परमेश्वर कहता है मैं दोबारा नया करूंगा। And then also in the second point, God said, I will restore your health आपकी सेहत को तुम्हें दूंगा, and I will restore your joy. आपके आनंद को दोबारा And I will give you the double honor. और 2 गुनी इज्जत दूंगा। And our last thing I just want to say about the job life. और हम जैसे आखिरी में अय्यूब की जिंदगी के बारे में बात Last Sunday करें। also we talk about, through our speaker, we hear about the book of Job. तो जैसे कि पिछली बार भी हमने अय्यूब के When बारे we में see पढ़ा, the book of Job chapter 42, अगर हम अय्यूब की किताब का 42वां अध्याय all देखते हैं, chapter when you read, अगर हम पूरा अध्याय पढ़ेंगे, chapter 1, पहले अध्याय में Job lost everything. अय्यूब ने सब कुछ खो दिया। He have a sons and बच्चे wife, थे, sons प्रॉपर्टी and थी, children. पैसा था, He have a richest man. बहुत अमीर आदमी था, He was very rich. बहुत अमीर था। Then suddenly, तो अचानक क्या हुआ? Satan took permission from God, शैतान ने परमेश्वर से परमिशन ली and God gave permission. और शैतान ने परमेश्वर ने And दी थी। Satan come and destroy all his enemies, animal, cattle. शैतान ने उनके सारे जानवरों को, सारी भेड़ बकरियों को खत्म कर दिया, And then Satan destroyed all his children. उनके सारे बच्चों को समाप्त कर दिया। But God never fell in God because Job always faithful in God. लेकिन अय्यूब ने अपना परमेश्वर में विश्वास नहीं खोया। Satan wanted Job to be cursed God. शैतान चाहता था कि अय्यूब परमेश्वर को श्राप देने लग जाए Satan wanted Job to not worship the true और वो living सच्चे God. परमेश्वर की आराधना करनी छोड़ दे। That is how Satan was. और शैतान हमारे जीवन में यही चाहता है। Satan thought that Job would reject it. वो सोच रहा था कि अय्यूब परमेश्वर को नकार देगा। Job may say,
say that, why God, you are taking my sons, my daughter. तो वो चाहता था कि वो परमेश्वर शिकायतें करे कि क्यों परमेश्वर अपने Satan बेटे और बेटी को wants ले Job to be complain God. वो चाहता था कि वो परमेश्वर को शिकायतें करे Satan wants Job to be say, why God you are doing to me. Satan wants Job to be complain. शैतान यही चाहता था कि अय्यूब शिकायतें करता रहे But you परमेश्वर see the whole chapter of Job. लेकिन अगर आप पूरा अध्याय पढ़ें Job never complained. अय्यूब ने कहीं पे भी शिकायत नहीं करी When the dear friend come, जब उसके दोस्त भी आए even his own wife उसकी अपनी पत्नी ने भी यही कहा told him, उसे कहा curse your God and die. कि अपने परमेश्वर को श्राप दो और मर जा Then Job said no. अय्यूब ने कहा नहीं My God will never fail, and my God is the true living God. That's why he say, I naked come, I naked go. तो उसने कहा कि नहीं मैं नंगा ही आया था और नंगा ही जाऊंगा मेरे परमेश्वर ने ही And दिया all his friends come. और उसके सारे दोस्त आए Instead of encouraging him, उसको सराहना देने की they बजाय disappointed Job. वो निराश कर रहे थे Oh, why you God is not helping you? अय्यूब के दोस्तों ने कहा कि तेरा परमेश्वर Why God allow your sons, your daughter to die? तेरा परमेश्वर तेरी मदद क्यों नहीं करता Why God allow you to your property be तेरी lost, प्रॉपर्टी तेरे बच्चों को खत्म your क्यों job कर to be दिया lost, तेरी नौकरी खत्म your क्यों हो गई business to be lost, तुम्हारा व्यापार your नष्ट हो family गया, to be lost? तुम्हारा परिवार नष्ट हो What गया kind of God that you are ये worshiping? कैसा परमेश्वर है जिसकी तू आराधना करता है But Job said, लेकिन अय्यूब ने क्या कहा my God, bad thing will never come. कि मेरे परमेश्वर के साथ बुरी चीजें नहीं होती Job never complained. उसने कभी शिकायतें नहीं करी Not only lost his everything, जबकि अय्यूब ने तो सब कुछ ही खो दिया but था now he got the sickness. उसे बीमारी मिली And everything people cannot see Job. और अय्यूब के शरीर में इतने फोड़े थे कि लोग उसको देख भी नहीं And he सकते was थे। weak, go through pain. और उसके जीवन में बहुत Even दर्द the था। wife cannot see. उसकी पत्नी भी उसको Even देख the नहीं people पाती। cannot come near to him. लोग उसके करीब भी नहीं आते Because he come with a kind of skin. These उसकी are शरीर boiled things coming. उसके शरीर में बहुत सारे फोड़े And हो गए थे। the liquid are dripping in his body. और उसके शरीर के फोड़ों से पस भी बह रहे So थे। when people see him, जब लोग उसको देखते they थे cannot able to come near the उसके sickness that पास भी they have. नहीं आते थे But people were, seeing what kind of God that he is worshiping. लेकिन लोग कहते थे कैसे परमेश्वर की आराधना करता है But so faith never goes. लेकिन अय्यूब को परमेश्वर विश्वास नहीं हिला The more you go through, जितना ही उसके जीवन में the परेशानी more आई you faith God. उतना ही विश्वास बढ़ा In the end, और अंत में Satan has no way. शैतान के पास कोई रास्ता ही नहीं रहा Satan cannot get victory from शैतान को Job. सफलता ही नहीं मिली Satan left Job. शैतान ने को छोड़ना ही पड़ा God Job the victory. और परमेश्वर के नाम से अय्यूब को And सफलता मिली all the things that he lost, और जितनी चीजें उसने खोई थी son, daughter, सारी संतानें सारी His प्रॉपर्टी health. भेड़ बकरियां उसकी सेहत everything lost. सब कुछ उसने पा लिया The end, और अंत में he remained faithful. वो विश्वास He योग्य रहा remained faithful to वो God. विश्वास योग्य रहा Trusting to God. भरोसा रखता In रहा the times of situation, परेशानियों के समय में भी, challenges, चुनौतियों में, temptation, परीक्षाओं में, persecution, सताए जाने में pain, दर्द में broken heart, टूटे हुए दिलों में he alone, वो अकेला भी था nobody with वो him. उसके साथ भी नहीं था Even the wife is not with उसकी him. पत्नी भी उसके साथ नहीं थी And he alone. वो अकेला था But he said, पर फिर भी उसने कहा I will never leave my मैं God. परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा My God is the Almighty. मेरा परमेश्वर महान He परमेश्वर has है created me. उसने मुझे बनाया है And he is the owner of my life. और वही मेरे जीवन का I am अधिकारी not है the owner of my मैं life. अपने जीवन का अधिकारी My नहीं children are not my owner. मेरे बच्चे मेरे I अधिकारी am नहीं not the owner of my मैं children. अपने बच्चों का अधिकारी I am नहीं not the owner of my property. मैं अपनी प्रॉपर्टी का अधिकारी नहीं Everything belongs to God. हर एक चीज परमेश्वर की ओर से Let आई है him take away. उसे लेने दो But my faith will never say लेकिन no. मेरा विश्वास कभी नहीं And हिलेगा when he stand, और जब खड़ा रहा the end, अंत में what the Bible say? बाइबल क्या बताती है Job chapter 42 verse 10. अय्यूब के 42 के 10 में And the Lord restored Job. परमेश्वर को सब कुछ दे दिया Lost where he prayer and his friend. Indeed, the Lord gives Job twice much as he has before. Amen. 42 के 10 में लिखा है 652 पेज नंबर जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दोगुना यहोवा ने उसे दे दिया Amen. God is good. All the time. See, our God, the Job that worship is our God. कि जिस परमेश्वर की अय्यूब ने प्रार्थना करी वही परमेश्वर हमारा भी है See, Job was lost his children. उसने अपनी संतानों को खो दिया Then God giving back double children. परमेश्वर ने फिर भी उसको दो गुनी When संतान you read the whole chapter, अगर आप पूरा अध्याय the Bible says Job's children are more beautiful, double beautiful than before one. तो बाइबल बताती है कि अय्यूब के बच्चे पहले से भी ज्यादा सुंदर थे And the Bible says God was blessed double portion more than before. और दो गुने आशीष ही परमेश्वर के जीवन में डाले That is His promise. ये परमेश्वर का The वादा है Bible says He did
gives Job twice as much as he has तो बाइबल before. में लिखा है कि परमेश्वर ने उसको 2 गुने आशीष दी। In verse 42 verse 10. 42 के 10 में। So the Job was receiving double blessing. तो अय्यूब को 2 गुने आशीष मिले। Job was before one, पहले तो एक चीज होती थी, but that one also lost. वो एक चीज भी खो But गई, he remained faith in लेकिन God. जब उसने विश्वास योग्य He रहा, remained trusting in God. भरोसा रखता रहा, In the times of pain, तो दर्द में, in the times of challenges, चुनौतियों in में, the times of the struggle, परेशानियों in में, the times of pandemic, और कितनी in महाआपदाओं the में, times of disease. कितने रोगों में भी। See, now you may be lost your family members. हो सकता है परिवार को सदस्य Now you may खो be दिया, lost your wife. अपनी पत्नी को Now, दिया, now you may be lost your या husband. अपने पति को खो दिया, Now you may be lost your business. या अपना व्यापार खो Now दिया, you may be lost your good health. अच्छी सेहत खो दी हो। But we should not be rejected God. लेकिन हमें परमेश्वर को We should नकारना not नहीं turn है, away from हमें God. परमेश्वर दूर नहीं जाना We है, should not we should not hopeless in God. हमें परमेश्वर में आशा खोनी नहीं We है, should have a faith just like a Job. विश्वास रखना है अय्यूब की जैसा। Then Satan will just, Satan makes sure that we should be lost everything. Satan makes sure that we should turn away from तो God. शैतान तो कोशिश करता ही रहेगा, लेकिन एक दिन वो आपके विश्वास देख के हार मान जाएगा। Amen. आमीन। So now the Job never turned away from God. तो अय्यूब परमेश्वर से बिल्कुल भी नहीं परे हटा, And God blessed double और portion. उसको 2 गुने परमेश्वर ने आशीष दिए। So when God bless us, जब परमेश्वर हमें आशीष He देते will never bless just a little. तो परमेश्वर हमें थोड़े आशीष नहीं When देते, God bless us, लेकिन जब आशीष देते He हैं, always bless us with double. लेकिन 2 गुने आशीष। So Job, Job got back all his sons and daughters. तो अय्यूब को अपने सारी संतानें दोबारा And मिली, because Job gave back all the things, the cattle, sheep, everything that he lost. सारी भेड़ बकरी जो खो दी थी वो भी मिली, And Job restored back his health. और अपनी सेहत भी दोबारा मिली। See, before he was sick, पहले वो बीमार था, now he was healed again. लेकिन अब वो चंगा हो गया। That God is our God. वो परमेश्वर हमारा So परमेश्वर। this 2022, तो ये 2022 you may be lost everything. आपने सब कुछ खोया होगा, God say, I will restore you. लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे खोए You हुए may be साथ lost में your health. आपकी सेहत खोई हो, But God say, I will heal you. परमेश्वर कहता है मैं I तुम्हें will चंगा restore करूंगा, you back health. मैं तुम्हारी सेहत You दोबारा may ठीक be करूंगा। you may be lost everything, so your joy, your peace, everything. आपका आनंद और आपकी शांति आपने खो दी हो, But God said, I will restore you. लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें You दोबारा may be दूंगा। carrying so many wounds in your life. अपने जीवन में बहुत सारे जख्मों को लेके घूम रहे हो, Wounds of broken heart, वो जख्म जो दिल टूटने से हुए, wounds of pain, जो दर्द के जख्म, wounds of challenges. या चुनौतियों के जख्म And है, nobody knows और कोई नहीं the जानता wounds that inside. जो आपके अंदर जख्म And है, every day you pain. लेकिन हर रोज दर्द हो रहा है, Cry. आप रो रहे हैं, But God knows. लेकिन परमेश्वर जानता है, God knows what is the wounds. परमेश्वर जानता है कि आपके जख्म क्या है। And nobody cannot see your wounds. कोई भी आपके जख्म देख नहीं सकता, Inside, लेकिन अंदर से you go through pain. आपके जीवन में परेशानी Whenever है। you remember, आप जब भी उन चीजों you को might याद be करते हैं, crying. आप रोते होंगे, and you could not able to share people. आप लोगों से बांट नहीं पाते होंगे, But God knows. लेकिन परमेश्वर जानता है। But God said, परमेश्वर कहता है I will heal your wounds. मैं तुम्हारे जख्मों को भर दूंगा। Amen. Amen. That is the years that we are going to तो have. उस साल की बात कर So रहे हैं। this 2022 तो ये is 2022 the years of तो restoration. ये दोबारा खोई हुई चीजों को पाने का साल है। Amen. आमीन।